हेलो सांग मैंने मुझे वेलकम करी आम यूट्यूब चैनल को। तो जो भाई आप देखिपुचे आम आज जाऊँ पेपर सॉल्व करने छत्तीसगढ़ सेट। ओके, छत्तीसगढ़ सेट 21 जुलाई 2024 रे जो एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ रे पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस छत्तीसगढ़ से 21 जुलाई 2024 रे होता। तो बहुत गुड़ाए स्टूडेंट मत रिक्वेस्ट कले जे सर गोटे माने एमती गोटे वीडियो आणतु जोटा कि आम बहुत भाव में क्वेश्चन को डिस्कसन करिपरिबा। आउ वी कैन आल्सो रिवाइज द syllabus in a very short time. So with due request I came back with this Chhattisgarh set 21 July 2024 complete paper. Okay, तो मु आशा करुँचे एटा आपण मानू हेल्प करिवो। तो मु ऑलरेडी आंसर आर लाइक हाईलाइट कर देछि। बर्तमान हमारा ऑब्जेक्टिव कोन ना, वी विल ट्राई टू सी द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, and at the last I would like to share this PDF in my YouTube channel, in my Telegram ID. So if you have not joined my Telegram ID, that makes sure that you must join the Telegram ID. Subsequently also subscribe the YouTube channel. So this is the one humble request from my side to all my dear students. So let's see the first question. The Marxism related to what? Option A, classless stateless society, then state will wither away, then your the dictatorship of the farmer. Okay, then option 4, the from each according to his ability and to his according to his needs. So the correct answer is option D. Option D is the answer, that fourth, first and second. Okay, and your option third you need to eliminate, because according to Marxism it is not the dictatorship of the farmer, but it is the dictatorship of the working class or dictatorship of the proletariat. So that's why option 3 eliminated. Okay, and hence answer is option D, fourth, first and second. Okay, এটা बहुत conceptual question, then you need to understand. तुम जब कॉन्सेप्ट क्लीयर अच्छी तो तुम ये क्वेश्चन को भल हैंडल कर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी. सो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, आंसर ए ऑप्शन है भिकू पारिक. ओके, भिकू पारिक रोड ए बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी. So it's very important. Then next question, who said the efficacy of power increase or diminish according to the various condition under which it must operate? Option A, McLever, option B, Beach, option C, Fayol, and option D, Garner. And to be honest that even I don't know the answer of this question, so ମୁଁ ଏଇଟା आंसर कहବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ I like not sure about the question number 3. So if you could you know, then you can like answer it. Okay, then moving to the next question, that who one of the following is not an exponent of new liberalism? Option A, F.A. Hayek, B, M. Friedman, option C, Robert Nozick, and option D, Karl Popper. Okay, तो आंसर होची कार्ल पॉपर. दैट कार्ल पॉपर इज नॉट ए न्यू लिबरालिज्म स्कॉलर. तो आम बहुत भाव डिस्कस कर रिगार्डिंग कार्ल पॉपर एंड हिज आइडिया ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. ओके, तो यहाँ मोर SSB लेक्चर में कार्ल पॉपर रिगार्डिंग पचार क्वेश्चन. तो यू नीड टू ऑल्सो कवर द कार्ल पॉपर. ओके, कार्ल पॉपर इज ए नॉट ए न्यू लिबरालिज्म थिंकर. ओके, then next question, who said empirical exploration that shows the change occurring in an environment in clear connection to power is termed as a political ecology? Political ecology here the concept that empirical exploration that shows the change occurring in an environment in clear connection to the power. So environment and power, that is known as the political ecology. Who said? Option A, Max Weber, Robert Dahl, Robbins, and the Michael Ray Dobbs. So option A, Max Weber. तो आमर ऑब्जेक्टिव हो कौन आज जो क्वेश्चन डिस्कसन कर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट वुड हेल्प टू अस फॉर आवर SSB लेक्चर 2024. सो you can get this kind of statement that who said empirical exploration that shows the changes occurring in an environment in connection to the power, that is known as political ecology, Max Weber. That's very important. Then next question number 50, question number 6. Question number 6,
who is the early socialist among the given below whose birthplace was not France? Okay, so we know that the early socialist thinker or the utopian socialist thinker Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier, and the birthplace was not France. That is how Robert Owen is not belongs to the France. Okay, Robert Owen are not from France. Robert Owen from UK. Okay. So which scholar from UK? Robert Owen. And Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier, they all are the belongs to the early socialist or utopian socialism. Then who said free development of each is the condition for free development for all? Okay, free development of each is the condition for free development of all. So option A Locke, Rousseau, Mill and Karl Marx. So option B is answer Rousseau. फ्री डेभलपमेंट ऑफ इच इज द कंडीशन ऑफ द फ्री डेभलपमेंट ऑफ ऑल. तो से मुझे ना आमको मैक्सिमम क्वेश्चन बर्तमान समय सल्व कर अच्छे जहाँफल ये जो यूनिक स्टेटमेंट गुड़ा अच्छी दैट वुड हेल्प टू for us to remember maximum things for our examination. Okay, so option A B that say Rousseau said that the free development of each is the condition of the free development of all. Okay, then next question utopian socialism. तो मैं already तुमको कह दी utopian socialism बा early socialist Charles Fourier, Saint Simons. Okay, they are the utopian socialism and option B is the answer first and second. Okay, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. हाँ, बहुत बढ़िया. Let me size it. Okay, fine. Then another question here that the match of the following: natural theory right, legal theory right, historical theory of right, social welfare theory right and different thinker. एटा मध्य बहुत बड़ा क्वेश्चन. So natural theory of right you can match natural theory of right whom the basically natural right theory Cicero. Okay, Cicero natural right theory. legal theory right Austin. Okay, Austin होची legal theory of right. So B third. Okay, so B third. हाँ, option C is the answer. Okay, question number 9 option C is the answer. That natural theory right Cicero, then legal theory of right Austin, then historical theory of right Ritchie and your social welfare theory of right Lasky. Okay, এটা बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये भाव आमको रिमेम्बर करार अच्छे. ओके, another question आसला that who is correct. Okay, what is the correct? A right will be fundamental right if it has been provided in the chapter of the fundamental right of the constitution. Okay, এটা बिल्कुल ठीक अच्छी कारण fundamental right we all know that mentioned in the chapter third the part third of the Indian constitution, that is the fundamental right we all know from 12 to 36. Okay, getting my point? Then the right provided in the constitution other than in the chapter of the fundamental right shall be constitutional right. तो आमर दी प्रकार right अच्छी, गोटे हूँ fundamental right and on other hand the constitutional rights. Those rights are mentioned in the part third of the constitution, that is known as fundamental rights. Other than the part third those mentioned in our constitution, that is known as the constitutional rights. Okay, तो आमको ये जिनिसटा मन रखियार अच्छे. Then another question it would be possible here that right to property is a fundamental right or a constitutional right. So you need to answer in the comment section. Okay, so I expect that your answer in comment section that right to property is a fundamental right or it is a constitutional right. Okay, समस्त आंसर करिवो. ठीक अच्छे, तो आंसर आर हूँ क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन सी हूँ द आंसर. बहुत बढ़िया. देन who is the modern political thinker to be credited to re-establish the status of normative political theory? Okay, normative political theory. Option A Michael Foucault, Robert Nozick, Mary Wollstonecraft and John Rawls. तो आंसर कौन आ रहा? आंसर हो चार ऑप्शन डी जॉन रॉल्स. 11 नंबर क्वेश्चन हो ऑप्शन डी जॉन रॉल्स बिकॉज जॉन रॉल्स एज ए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर who re-established the status of normative political theory or resurgence of the political theory. Remember we have discussed in the class of decline of political theory that John Rawls responsible to revival of the value or norm based political theory, resurgence of the political theory. Okay, theory of justice. So John Rawls is the correct answer. तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି class करो. Class is very important for all of you to secure the maximum score in your SSB lecture. Okay, then another question, who said only a person of a high character can experience the pleasure of the high quality? Okay, high character
and pleasure of the high quality, the Aristotle the answer. Okay, correct answer is option C, Aristotle. Only a person of high character can experience the pleasure of high quality, Aristotle. तो आमको एभली भाव स्टेटमेंट को मन रखार अच्छे बिकज जो तुम देख बहुत नुआ नुआ स्टेटमेंट आसूँ तो आमर एसएसबी लेक्चर से पचार तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सिटीजनशिप इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट ऑफ द पब्लिक गुड, instructed judgment of the public good, that means common good, public good, common okay, interest, public interest, public good, this kind of keyword you need to align with last key. So correct answer of this question is last key. Question number 13 option B is the answer, last key. बहुत बढ़िया। Then next another question, the philosopher and their view on the state, philosopher and their view on the state. Okay, so Plato, J.S. Mill, Hegel, Karl Marx, state is march of God on earth, state is artificial institution, state is necessary evil, state is man writ large. Okay, so Plato कौन, Plato होची हमरो ना basically state is man writ large. Okay, option A fourth. Okay, option A fourth and option B is the answer. So you can also remember the other thinker and their idea like J.S. Mill, state is a artificial institution. Okay, sorry, J.S. Mill, state is a necessary evil, Hegel, state is march of God on earth, Karl Marx, state is a artificial institution. Okay, so you can remember in this way. Okay, so that is how the different thinker spoke about the on state, the view on the state. बहुत बढ़िया। Then another question, according to Gramsci, which of the following is not a Marxist model of the analysis of the capitalist society? Okay, so Marxist model of capitalist society कोटा नहीं according to Gramsci. So structure of the dominance, legitimations, coherence or structure of cooperation. So option D is the structure of cooperation. Why? Now because Gramsci analysis the Marxist model, and in Marxist model of the capitalist society there is no any kind of cooperation, there is always a cohesion, domination, legitimations with the help of the base, control of the base, define the superstructure. ठीक अच्छी, तो लेजिटिमेशन से थिला, डोमिनेशन थिला, सेटा कोहेरेशन थिला, कोऑपरेशन इज नॉट देयर इन द मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, बहुत बढ़िया. Then in which of his works Karl Marx has described the economic determinisms? Option A German ideology, communist manifesto. Communist manifesto is answer. Option B is the answer. तो ये तुम गोटे क्लू अच्छी दैट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रोट इन 1848, जर्मन आइडियोलॉजी रोट इन 1846. एटलिस्ट ये दुटा बुक रो नाम मन रखार अच्छी ईयर. ओके, एटलिस्ट बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक एंड आई विल सजेस्ट यू इफ यू हैव द टाइम और यू हैव ए इंटरेस्ट to read or know political theory, you must read the communist manifesto. It hardly the paper like 40 to 60 paper total there, okay, in communist manifesto. So this is very very important. So you have to remember that economic determinism concept given in the communist manifesto by Karl Marx. Getting my point everyone? बहुत बढ़िया, बहुत चालाक. तो ये गोटे क्वेश्चन उठुची तो तुम पचार सार आपड़ तो क्वेश्चन दौरान तार आपड़ ही आंसर कौ दौर आमर कौन फायदा. तो ये मुझे आपण मानक कौन करुँना जज करूनी, ये आप कौन टेस्ट चलनी, आम देखुँ कौन क्वेश्चन कौ भाव आड़ी भाव नुआ नुआ स्टेटमेंट आम रिमेम्बर करवा आ नोट करवा. तो समस्ते कौन कर खाता पेन धरिक नोट कर नुआ क्वेश्चन ये आसला नोट डाउन करद. आम टार्गेट हूँ कौन ना ये क्वेश्चन गुड़ा जब रिपीट है एसएसबी रे आम बहुत भाव उपकृत हो पार. दैट इज द आवर टार्गेट दैट वी शुड take the maximum benefit from our classes. Okay, बहुत बढ़िया. इंद्र तुम सब बहुत चालाक. तो ये क्वेश्चन तो मुझे हलवा. तो why we should solve this question rather than discussing the answer and questions which is very beneficial according to my understanding. Okay, चलो बहुत बढ़िया. देन हु रोट द डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी? ऑप्शन बी रूसो. रूसो रोट ए बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी. तो यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट. हाउ मेनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी? टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी. व्हाट आर द टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर. Then another question, who is regarded as a new conservatism? तो एक क्वेश्चन रे मु आई थिंक इट वुड बी बेटर टू रिमेन साइलेंट. ओके, बिकॉज आई हैव don't read any book regarding the
like Gramsci, Hannah Arendt, Mariel Stonecart, John Rawls, and the new conservatism. Okay, so you can skip, or also it is not part of our SSB syllabus. You can also skip it. Okay, this question I would say it's invalid because like Gramsci is a Western Marxism thinker. Then Hannah Arendt, it's a Hannah Arendt को तमे को ideology रे माने align करि परियनि because she is a orthodox thinker. Okay, not belong to any kind of basically, sorry, my mistake, heterodox thinker, not orthodox. Okay, not belongs to any particular ideology. Okay, she itself one kind of legendary in the political theory, Hannah Arendt. Okay, in modern political, contemporary political thinker. Mariel Wollstonecraft, we all know, liberal socialist thinker, feminist liberal socialist thinker. John Rawls, also modern liberal thinker. Okay, so we cannot like include these four options in the umbrella of new conservatism. हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक अच्छे. Then option question number 19. According to Aristotle, state is the self-sufficient association. What does it mean? Because states fulfill all the needs of the individual. State is considered the highest association, self-sufficient association. State fulfill all the needs of the individual. That's why Aristotle talks that state is self-sufficient association. बुझे होची? बहुत बढ़िया. ठीक अच्छे, ठीक अच्छे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एथरो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आसो तुमर. प्लाटो इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, प्लाटो रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए एपोलॉजी, नोमोई, पॉलिटियस, पॉलिटिया. ओके, these are all the book related to the Plato. Option first, second, third, fourth option D is answer. All of them is related to Plato. So it is new information. तो तुमको सेति में कहूँ that we always need to solve the previous question because this question tell us the new informations. Okay, I agree that you read a numerous number of the book, but you cannot find this kind of factual information. So question number answer option D, all are the related to the Plato. So let's see the what does it mean by nomoi, politis, politia. Let's see. So you can see here student that politia means republic. The republic name. Okay, republic जो book रो आमर ना होच कौन? Politia. Politia हम कहते कौन? Latin दा कहते politia. Then politicus means philosopher Plato. Philosopher Plato is considered as a politicus, or even if you in tomorrow became a philosopher, then you will say this politicus, this politicus. Okay, तम ना रे तुमको कह दिया politicus. You are a politicus. Then nomoi, laws रो Latin नाम होची nomoi. Then another book apology आमे समस्त जानछन. Okay, getting my point? बहुत बढ़िया. चलो मजा आसुन भाबुती बहुत एंजॉय करते पिला माने. हाँ, बहुत बढ़िया. Then Sri Aurobindo is related to which of the following? Option A Yogantara, second option the Bande Mataram, third Arya, then fourth Karma Yogi. तो आंसर कौन आ रहा ना? Sri Aurobindo related to which of the following? Option D, all of the above. Okay, option D first, second, third सबू related to Sri Aurobindo. बहुत बढ़िया. हाँ, देखिए आम आंसर और शेयर बहुत बढ़िया. आर्य हूँ कौन? ए फिलोसॉफिकल रिव्यू बाय अरविंद घोष. सो अरविंद घोष फिलोसॉफिकल रिव्यू आर्या. हाँ, ठीक अच्छे. देन वंदे मातरम एडिटर. सो योर अरविंद घोष वाज ए एडिटर ऑफ द वंदे मातरम. वंदे मातरम एडिटर किए थे? अरविंद घोष थे. ठीक अच्छे. देन कर्मयोगी एंड धर्म ए न्यूज पेपर. ओके, सो टू न्यूज पेपर रोड बाय योर अरविंद घोष. कौन? कर्मयोगी एंड धर्म. ठीक अच्छे. कर्मयोगी एंड धर्म टू न्यूज पेपर अरविंद घोष. एन योगंतरा ए सिक्रेट ग्रुपटा. तो तुम जानिछ जमती कि अरविंद घोष वन ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ओके, ठीक अच्छे. तो से पार्टिसिपेट करते सिक्रेट ग्रुप योगंतरा. हाँ, दिस ऑल रिलेटेड टू अरविंद घोष. जो तुम न्यू दिस इज, इफ दिस इनफॉरमेशन इज टोटली न्यू टू यू, देन आई विल सजेस्ट यू प्लीज कीप अ पेन पेपर फॉर राइटिंग दिस नोट. ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया. यू आर वेरी चलाक. Then core of the Periyar philosophy is related to what? Self-respect. Just remember, core philosophy Periyar self-respect. Self-respect movement के आरंभ होता 1925 रे. तो यहाँ मध्य गोटे क्वेश्चन हो जाई परिबो का मन पई ना यूजीसी नेट पिला मन पई. ठीक अछि, बहुत बढ़िया. Then another question. हाँ, as per the paper Why Socialism published by Jayaprakash Narayan in 1936. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम पाइले
व्हाई सोशलिज्म गोटे पेपर हूँ जयप्रकाश नारायण 1936 रे पब्लिश होता नॉट फॉलोइंग इज द गोल ऑफ सोशलिज्म ट्रांसफर ऑफ द पावर इन द हेड ऑफ प्रोड्यूसर्स हाँ planning control of the development of a country in the head of the producer elimination of operation classes functional adult suffrage ठीक अच्छी देन प्लानिंग कंट्रोल लाइक ए एंड बी भितर आंसर कोड़ा मध्य हम किंतु मत जी लगुच ऑप्शन ए इज द आंसर ओके फिर भी आई वुड लाइक टू रीचेक अफ इट बिकॉज आई नीड टू स्टडी द व्हाई सोशलिज्म पेपर फास्ट देन आई विल कम टू विथ आंसर ओके देन अनदर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज ए इंडिया फॉरमोस्ट dissenter critic intellectual non-conformist and fighter of the lost cause that never lose their following okay so किए माने स्टेटमेंट कहते ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक अच्छे तो यार आंसर कौन हो जयप्रकाश नारायण डिस्क्राइब द इंडिया फॉरमोस्ट डाइसेंटर क्रिटिक इंटेलेक्चुअल नॉन कन्फर्मिस्ट that means you cannot make convince Jayaprakash Narayan okay one of the legend and fighter of lost cause that never lose their following okay so it is Jayaprakash Narayan do remember it would helpful for the I will not say it's for the SSB lecture but for the UGNet okay because this paper is dedicatedly for the set net people okay but we can also get benefit out of it okay as a UGNet people okay so तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଇକ୍ आई वुड लाइक टू थिंक दैट आई शुड स्टॉप हियर ओके ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ଲେକ୍ଚରକୁ बिकॉज आई नीड टू इभालुएट वेदर पीपल आर ओके विथ दिस कंटेंट और आई नीड टू वर्क अपॉन इन अदर कंटेंट ओके तो मुझे वीडियो माध्यम आपको चेष्टा करी जे तुम रेस्पॉन्स को भाया दौच तुम जब वीडियो को भलसे देख व्यूज जब संख्या बढ़ला वीडियो रे तो मुझे भावी आउ जो रेस्ट ऑफ केतरा क्वेश्चन अच्छी 24 अच्छी आ रेस्ट ऑफ 76 जो क्वेश्चन अच्छी टोटाल 100टा क्वेश्चन अच्छी 76 क्वेश्चन अच्छी मुझे थिंक करी इफ यू आर कोऑपरेट विथ मी then I will try to conduct the more session with respect to the rest of the 76 questions okay if the viewers of this YouTube video will increase then I will also work upon it for making this kind of session okay so sethipai I would like to stop here and would like to request to all of you if you like my effort do subscribe do share with your colleagues okay guys so this is all about from my side thank you everyone jai jagannath